लेकर ताकि एक अर्ली एडवांटेज दिलवा सको आप यीसुनशिन को, चाहे तो अपने मिड को. Man, this could be a really good idea from RNTX. A nice draft eventually cooked up though. On the other side, True Rippers will try to go with the same front to back which they have with the Marcel along with the Uranus, but I don't see a lot of crowd control. So we'll maybe rely on the exact same late game epic comeback. Will that happen or not? We'll see in the second matchup, ladies and gentlemen. The first game here. It's RNTX, True Rippers. And both interesting position is one of the player going towards for the orange buff, and from the side it's going to be RNTX going for the purple. Look at the position of Uranus. It's going to be really interesting though. Which playing on that Zetian could be a very deadly man. Granger up against YSS once again towards gold lane. We talk about the early emblems looking solid as of now. Anything different you are seeing here? Now same standard. Master Assassin की तरफ गए Cram God. Now with the lethal ignition. वही extra bit of damage चाहिए उनको थोड़ा सा. सुना? Cram God picked up. All right, fair. अब यही सबसे बड़ी दिक्कत है, वो डेडली स्टिंगर्स जो है हेलगट की स्किल 2, उनके पैसिव के चार्जेस बनते रहते हैं थोड़ी देर के अंदर. जैसे वो 4 चार्जेस होंगे सबसे ज़्यादा डैमेज पड़ेगा उस डेडली स्टिंगर्स से, और उसी चीज़ की उसे एडवांटेज लेने की कोशिश रहेगी क्रैम गॉड की wherever he's hopping around, and this should be in towards that gold lane though majorly, but that ain't happening. Oh, up top Rehan seems to be in trouble right now. Concentration है नहीं उनके पास available, but a nice side step thanks to that Purify. और अब retaliation आएगा. Ian instantly hopping in as well with the deadly magic, did not land the poker trick on right target. So Meteor shoot, survive, but man, Rehan is just absolutely annoying. Whoa! On last basic से Ian catching Joseph as well. A dream start for True Rippers. And now you got the turtle in your favor and completely in your feet. Because अब True Rippers बड़े आराम से gold का भी फायदा उठाएगी, इस shield का भी फायदा उठाएगी, and that's gonna be Ian's getting that. Yeah. Interesting. Oh my god! This is crazy. This is brutal. Oh. Kimi with the golden arm, although Mirio is surviving, but for how long? Ian's eventually get another kill. The timing of that ultimate is perfect, and now you're taking control of the top lane like it's just an easy chess game. बढ़िया रोटेशन है ट्रू रिपर्स की, कंसिडरिंग आर्लेट के पास लेन एडवांटेज नहीं होती, वेव क्लियर नहीं होता, प्रॉब्लम्स होती है. इवेंचुअली जस्ट punishing him for that before he even turns into that level 4 man. पहले टर्टल के बाद की एक वेव के बाद भी मीरियो लेवल 4 नहीं हुए थे. That is a big problem right now. Fury Hammer बनाया जरूर है, but man, they're just destroying Rehan. They're trying to capitalize on the same thing now, and eventually the constant chain CC में फंस गए since the Purify was on cooldown, and he's went in with the Warrior boots instead of the tough one. Probably the idea is क्योंकि सामने Meteor रहेंगे, he wants that extra physical defense. ना पड़ेगा भाई. Kimi की positioning अच्छी है, although once again you know how you're gonna play with the Marcel. Passive बहुत ज़्यादा अच्छी थी, maintaining the distance, controlling the minions. YSS के लिए थोड़ी सी परेशानी because he got ganked by 2 players at least. Look at a far lane T1. Oh, I thought that Kimi would have got that particular kill, but nah, Jom and Cram got sticking together. RNTX के ऊपर early ये जो आपने pressure create करा है, it is looking very good by the way. सवाल ये है कि कितनी देर तक इस प्रेशर का फायदा उठा सकते हैं, because you need that mid game power spike of Kyle. Sky Piercer बनाने के बाद he needs to get a few kills. And इस गेम में तो उनको सी हालबर्ट भी लगेगा, considering वो front line जो जोसेफ और मीरियो की आएगी, उसको penetrate करना is going to be difficult. Total spawn. Very interesting though. Up top, Rehan फंस सकता है थोड़ा सा इस टाइम पे. जोसेफ on his face as well, eventually stunned up, but Purify available है concentration के साथ, so he should be fine right now. Just trying to wait out those kills, or instantly you went in with the deadly magic. Meteor is going to be running back to safety. Phoenix Fury used up, stun Ayatha as Kimi survives by the skin of his teeth. Joseph Tracer's Wrath के बाद भी वो kill मिल नहीं पाया, and now they have to go back. They cannot go for this fight. Numbers advantage for True Rippers, and bottom lane tier 1 traded off for the turtle. बहुत अच्छी शुरुआत. So now once again, as just mentioned, trades यहाँ पर दोनों टारगेट का होता जरूर हुआ. Bottom पे YSS
fully mentioned, 108 seconds, and then the next objective is going to be there, the total. But love the way how Rehanch is controlling his. Consecration is back. Granger यहाँ पर river की तरफ पहुंच चुके हैं. Marcel is prepared. Kimi gonna be very interesting position in the golden arm. Baited out. Nice one RNTX though. But still, Consecration is gonna be there. Instantly chimes in. Some good damage, but distance बहुत ज़्यादा. Hellcut. Gramgod की तरफ ध्यान देना पड़ेगा भाई. The Dark Knight. Kimi once again chiming in. फिर से bait कराने की कोशिश. The passive of that Marcel is very, very annoying though. Goes for the far lane. T1 spots out Mirio, diving onto him. Now Joseph want to join in, but the passive Marcel की फिर से उन्हें रोकती हुई. Meanwhile, Kyle taking up once again the advantage of the far lane. T1 has been destroyed. ट्रेड किया है फिलहाल इस पॉइंट पे, बट अगेन क्योंकि टॉप You're की already भी one advantage है आपके पास. वही क्योंकि टॉप की आपने ऑलरेडी टर्रेट गिरा दी है, सो ट्रू रिपर्स आर द वंस हु आर कंट्रोलिंग इट. एक अनोइंग फैक्टर बनेंगे क्रैम गॉड ऑन दैट हिल कट, एंड दैट विल बी बाय कॉन्स्टेंटली पुशिंग आउट दोस साइड्स. और आप इंडिविजुअली किसी को भेज नहीं सकते बिकॉज ही विल फिनिश देम ऑफ. और रैपिड बूट्स बना लिए इस टाइम पे आफ्टर दैट फर्स्ट आइटम ऑफ ब्लेड ऑफ हेप्टेसीज. तो कॉन्स्टेंटली वो मोबिलिटी पे फायदा मिलेगा, एक्स्ट्रा मूवमेंट स्पीड मिलती है विद द रैपिड बूट्स, बट एज सून एज यू डील डैमेज एंड टेक डैमेज it is half. और इसी की बात मैंने करी थी अप टॉप. इंस्टेंट डैमेज और ग्रेंजर पर काइल अभी भी काइट करेंगे, एंड जस्ट विद द हेल्प ऑफ किमी गेटिंग द इमोबिलाइज ही शट्स डाउन क्रैम गॉड राइट बिफोर दिस टर्टल. That means RNTX cannot fight for it at all. No map control भाई, वो जो early जो bans करे गए थे बहुत अच्छा आपने कॉम्प करा है. Tixon bans बहुत सुंदर लगते हुए. Another total. This is going to be the third one in favor of Team True Rippers. Although YSS still towards far lane, goes back, recalls himself. Top lane की तरफ बहुत ज़्यादा tease damage. Instant golden art का इस्तेमाल ज़रूर करा गया है, but still Gramgod chimes in. Have to go back, Kyle. Dishing out good amount of damage. Zetian also chimes in. Some ultimate has been shared in. Yeah, but it's fine. Yeah. Doesn't matter. दिक्कत नहीं है. आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट विच की पोजीशन उससे भी ज़्यादा बेटर थी. Always staying so far behind right now. Kimi a bit too far ahead. Mirio with a flying clown. ज़्यादा पास पहुंच नहीं पाए. Had to drop down a little bit before. Yeah, nice try, but didn't work out. So, up top, this could be big. Flicker baited out Cram Godka, so the tier 2 should potentially fall, but then have to respect Mirio. A crazy outplay with a final slash, and things can turn around very quickly. That's Sonata is still right there. Once again, they are chiming in. This could be a very big play by Eon, but he has to go back instant. Shut down by Granger. Jom? Another demon has been destroyed. Kimi not in a good position. Jom is looking a bit bad position. Rehan! Joseph is done. Mirio has to go back. Jom falls back. Asuna eventually trades out a player, but आप 2 kill अपने अगेंस्ट में जाते हुए. RNTX completely outmaneuvered. At least mid for mid, though एक चीज तो अच्छी है, but Joseph falling down there was again a problem. और Fredrin के ऊपर you want a fast early game, you want a controlled early game. वो comeback करना Fredrin पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आ जाती है right now, and okay, this is the annoying factor of the Marcel Granger comp, and slowly and steadily ज़्यादा परेशान करने लगेगा. I think so. This is the reason why Granger might show up a little bit more in those drafts. No way, man. Compared to how much we normally saw him previously. True. और परेशानी क्या है यहाँ पर scared कि Kimi every single time he's just repositioning himself. And उन्हें पता है उनकी passive इतनी annoying है कि एक टाइम पे 2 प्लेयर को भी परेशान कर सकती है. Look at the position of Rehan. Once again, he knows the consecration will eventually help him. Mirio को फिर से आपने दोबारा से passive से परेशान करा. Rehan spotting out Joseph. Jom is going to be the player जिसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. But Kyle at Granger, no way spots him out. It's fine. अभी Ridiculous stuff. पूरी टीम आसपास है. Nasuna का main काम है that he constantly pokes out the enemy and at the same time saves his own teammate as well with the Crimson Beacon. और Joseph बहुत बुरा फंस सकता है इस point पे. He's got to run away right now. The Deadly Magic on the face as well. Enough damage अभी तो नहीं है, but this is just what you need. Final slash on the face. Mirio misses out everyone. Gramgod पीछे से आते हुए, and this is the big play. Jom again showing his skill and experience. Shuts down Kyle from behind with the Dauntless Fleet. And with that, एक losing fight थी, उसको at least बराबर किया है. Yeah, winnable.
सिचुएशन से हटाते हुए ट्रू रिपर्स को। बट लॉर्ड बड़े आराम से, इत्मीनान से और बड़े प्यार से यहाँ पर ट्रू रिपर्स अपने लिए बटोरने वाली है। लुक एट द पोजीशन ऑफ किमी, कितना अग्रेसिव है। उन्हें पता है कि इवेंचुअली वो पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाली है। जॉम हैज टू गेट बैक इनटू द गेम मैन। टारगेट्स आपके फेवर में नहीं है। RNTX स्ट्रगल कर रही है हद से ज़्यादा। ट्रू रिपर्स दे आर लुकिंग वेरी गुड। द लेवल डिफरेंस इज आल्सो टू गुड। आरलॉर्ड देखना चाहता हूँ मैं, बिकॉज द फैक्टर ऑफ पुटिंग आरलॉर्ड इन अ टीम इज स्टिल मिसिंग। I think so जॉम कन्वर्ट कर जाएंगे इस गेम को अपनी टीम पे। ओके, अ बिग स्टेटमेंट। ताकि पूरी टीम का गोल्ड एक तरफ, जॉम का एक तरफ, BOD, एंडलेस बैटल, स्ट्राइक तीनों कंप्लीटेड और उनकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एक सेट देना है वीडियो को बस। लुक एट ही जस्ट स्टैकिंग अप विद हिलकर्ट और वो मिनियन वेव को अभी के लिए तोड़ते हुए। जोसेफ गॉट स्पॉटेड, डजंट मैटर, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ही विल इवेंचुअली गो फॉल बैक बट इट इज टू लेट। कोल्डनार के अंदर पकड़ते हुए व्हिच हैज टू हेल्प हिम आउट। नाउ दिस इज लुकिंग वेरी बैड। काइल टेक्स हिम डाउन। डेसोनाटा is still alive, going with the inhibitor. Lord moves in, chimes in, but look at the position of Kimmy. Meanwhile, Win somehow managed to shut him down. It's going to be a kill, but Lord moved towards the base. Christian Nasuna takes down Minio. The Lord is out, but this time Job is still surviving, and Job